Once again, welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm gonna explain about STP theory, right? So इस वीडियो में हम बात करेंगे STP प्रोटोकॉल की, right? STP प्रोटोकॉल के थ्योरी के बारे में, right? STP प्रोटोकॉल क्या होता है और कैसे काम करता है? अगर मैं बात करूँ STP प्रोटोकॉल की, तो STP स्टैंड फॉर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, राइट? STP stands for spanning tree protocol, right? And second, it is an open standard protocol, right? एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है, राइट? Number fourth point is STP prevents loop between the switches. Right, STP prevents loop between the switches. Let's suppose if we have a redundant link, on that time STP will keep some interfaces, right, in forwarding state, and it will keep some interfaces in blocking state, right? If I talk about IEEE standard, it uses IEEE standard. It uses IEEE standard 802.1d, right? So what is the meaning of 802.1d, right? It means this is the original standard, right? This is the original standard, right? That provide a loop free, right, topology in a network, right, with redundant links. So as you can see that we have written 5 points. I will explain these things. Just give me 5 minutes, right? And STP uses Bpdu multicast MAC address. 6th point is STP uses Bpdu multicast MAC address 0180.3200.4 times 0, right? So STP stands for Spanning Tree Protocol, and it is an open standard protocol, and it is a layer 2 protocol. And STP prevents loop between the switches. Let's suppose if we have a redundant link
on that time STP will keep some interfaces in forwarding state, and it will keep some interfaces in blocking state, and it uses IEEE standard 802.1d, and it means this is the original standard that provides a loop-free topology in a network with redundant links, and STP uses Bpdu multicast MAC address, this one, I mean 0180.c200.4 times 0, right? So what is the meaning of STP prevents loop between the switches? Let's suppose, let me show you from the packet tracer that you can easily understand what I'm explaining. So as you can see that I have taken two switch, right? जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने टू स्विच लिया। जैसे ही मैं इनके बीच रिडंडेंट लिंक लगाऊंगा, आप इस टाइम पे देख सकते हैं कि ओनली हमारे पास एक सिंगल लिंक है, राइट? तो जैसे ही हम रिडंडेंट आई मीन टू लिंक्स लगाएंगे, तो इसमें से एक को ब्लॉक कर देगा एंड एक को फॉरवर्डिंग स्टेट में रखेगा। ये एसटीपी का काम होता है लूप फ्री टोपोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लूप बन रहा था, तो इसको ये प्रिवेंट कर दिया। दैट मीन्स if any frames received switch 1, so this frame will send to the switch B. After that, switch B will not send to the स्विच ए, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्विच ए को कोई फ्रेम रिसीव होगा होगा तो ये स्विच बी को भेजेगा, और दोबारा ये लूप जब बनेगा, देखेगा कि लूप बन रहा है, तो इसको यहाँ से क्या एसटीपी क्या करेगा, इस लिंक को ब्लॉक स्टेट में डाल देगा, राइट? तो एज यू कैन सी, लेट मी check that the interface administrative access interfaces. So आपने यहाँ पे देखा कि STP prevents loop between the switches. If we have a redundant link, or on that time STP will keep some interfaces in block forwarding state, and it will keep some interfaces in blocking state. So let me show you one thing. So as you can see that I got the console of this switch, right? So spanning tree. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोर्ट 0/2 इसने ब्लॉक कर दिया इस पोर्ट को, राइट? एंड पोर्ट/01 it is a root port, right? So next thing I am going to explain STP terminology, right? STP having some terminology that we need to understand, right? So STP terminology, right? What is the terminology of STP, right? यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, लाइक रूट ब्रिज, राइट? रूट ब्रिज, BPDU, and cost, DP port, I mean designated port, then RP port, root port, right? Then alternate port. This one be the what? Blocking port, right?
So it will be the backup port, backup of RP, right? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसटीपी में 1 2 3 4 5 6 ये टर्मिनोलॉजी है जो हमें समझना बहुत जरूरी है, राइट? वन सो STP, before that, I want to tell you one thing. STP perform three major tasks. STP perform three major tasks, right? Root bridge election. Number second, DP port, I mean designated port election, and RP port election. Right? So STP perform three major tasks. So next thing, I will talk about root bridge election, right? So this is going to be root bridge. तो हम बात करेंगे रूट ब्रिज, राइट? व्हाट इज रूट ब्रिज? A switch which has lowest bridge ID will become root bridge, right? And bridge ID bridge ID consists of two part, right? Priority plus base MAC address of switch, right? अगर मैं बात करूं कोई ब्रिज आईडी क्या होती है, ब्रिज आईडी टू पार्ट से मिलकर बना होता है, ब्रिज आईडी, राइट? फर्स्ट वन इज प्रायोरिटी, देन base MAC address of the switch, base MAC address of the switch, right? जो ब्रिज आईडी होती है वो 8 बाइट इंफॉर्मेशन होती है, राइट?
and this one 2 byte information. Priority will be 2 byte information. And this MAC address will be 6 byte information. So by default priority will be 32768, right? Default priority 32768, right? And range 0 to 65,535, right? एंड इट इज डेसिमल वैल्यू, जो प्रायोरिटी होती है वो डेसिमल वैल्यू होती है, डेसिमल वैल्यू में होती है, राइट? एंड मैक एड्रेस जो होता है हेक्साडेसिमल में होता है, हेक्साडेसिमल नंबर होता है, राइट? तो यहाँ पे आपने देखा रूट ब्रिज क्या होता है, a switch which has a lowest bridge ID will become the root bridge and the bridge ID consists of two part, priority plus base MAC address of the switch and यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिज आईडी 8 बाइट इंफॉर्मेशन होती है, प्रायोरिटी ब्रिज आईडी जो टू पार्ट्स में मिलकर होती है, प्रायोरिटी प्लस बेस मैक एड्रेस ऑफ द स्विच, प्रायोरिटी 2 बाइट इंफॉर्मेशन होती है एंड बेस मैक एड्रेस 6 बाइट इंफॉर्मेशन होता है और बेस मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल में होता है एंड बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 32768 होती है एंड रेंज जो होती है 0 टू 65,035 होती है एंड डेसिमल वैल्यू में होता है प्रायोरिटी, राइट? एंड द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस, लेट्स सपोज, let me show your topology one thing. This is switch 1, right? And this is going to be switch B and this is going to be switch C, right? Just for understanding, right? Let's suppose switch 1, switch A, right? Switch B, and this is going to be switch C, right? And these switches are connected to each other, right? So this switch having MAC address 0A, let's suppose, right? This switch having, switch B, MAC address 0B, suppose here, and this switch having MAC address 0C, and by default priority is 32768, 32768, right? By default all switches priority will be 32768, right? So what will be the bridge ID of this switch? So bridge ID, as you can see that here I have written bridge ID consists of two part, priority plus base MAC address of switch. So यहाँ पे आप देख सकते हो base MAC address 0A है and priority 2276 है, तो इसकी bridge ID होगी bridge ID 32768 plus
0A, राइट। और इस स्विच की होगी जो ब्रिज आईडी 03276 प्लस 0B, एंड स्विच सी ब्रिज आईडी विल बी 32768 plus 0C, right? Bridge ID consists of two part priority plus space MAC address of the switch, right? So this is a thing. So next video, next I will discuss about BPDU, right? So what is BPDU? अगर मैं इसे ओवरऑल आपको बताऊं, इसमें रूट ब्रिज जो बनेगा मेरा ये बनेगा स्विच 1, स्विच ए, एंड दिस स्विच आई मीन स्विच बी एंड स्विच सी विल बिकम द नॉन रूट ब्रिज for your information, right? Root bridge. I will tell you in next in more detail how switches elect root bridge and non-root bridge, right? Non-root bridge. So यहाँ पे हमने दूसरा टॉपिक लिखा था BPDU, right? What is BPDU? BPDU, right? If I talk about BPDU, BPDU stands for Bridge Protocol Data Unit, right? It is used to elect रूट ब्रिज का इलेक्शन करवाने के लिए बीपीडीयू का इनका यूज होता है। एंड बीपीडीयू मैसेजेस सेंड्स आफ्टर every 2 seconds, right? And a BPDU which has lowest bridge ID will become superior BPDU, right? I will explain more about superior BPDU. What is the superior BPDU, right, in upcoming session. So one more thing we have to write down here. Root bridge always generate a hello message after every 2 seconds. That message is called BPDU message, right? Root bridge always generate a hello message after every 2 seconds. That message is called BPDU, right? So as you can see that here I have written around 5 points, right? 1, 2, 3,
4, 5, right? So यहाँ पे आप देखा कि बीपीडीयू स्टैंड फॉर ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होता है एंड इट इज यूज्ड टू कलेक्ट रूट ब्रिज कलेक्शन करवाने के लिए बीपीडीयू मैसेज का यूज होता है एंड बीपीडीयू मैसेजेस सेंड्स होते हैं आफ्टर एवरी 2 सेकेंड एंड बीपीडीयू विच हैज अ लोवेस्ट ब्रिज आईडी आई मीन बेस्ट ब्रिज आईडी विल बिकम द सुपीरियर बीपीडीयू जिस बीपीडीयू में लोवेस्ट ब्रिज आईडी होगी वही बीपीडीयू क्या होगा सुपीरियर बीपीडीयू होगा एंड रूट ब्रिज ऑलवेज generates a hello message after every 2 seconds and that message is called BPDU message. So actually what happens when switches comes up, let me show you one thing. Let's suppose there is a switch 1, right? Let me copy that one, this one, right? तो यहाँ पे क्या होता है जब स्विचेस आप आते हैं, लेट मी शो यू, जब स्विचेस आप आते हैं सभी स्विचेस अनाउंस करते हैं कि आई एम द रूट ब्रिज। सो एक टोपोलॉजी में ओनली एक सिंगल रूट ब्रिज हो सकता है, राइट? सो सभी स्विचेस जब आप आते हैं तो सभी स्विचेस अपने आप को अनाउंस करते हैं कि मैं ही रूट ब्रिज हूँ बिकॉज दे डोंट नो ब्रिज आईडी टू ईच अदर। सो जब आप आते हैं तो एक दूसरे को बीपीडीयू मैसेज सेंड करते हैं। वो किस लिए सेंड करते हैं? रूट ब्रिज का इलेक्शन करवाने के लिए। सो उस बीपीडीयू मैसेजेस में जब बीपीडीयू मैसेजेस स्विचेस आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं तो उसमें अपना ब्रिज आईडी भी लगाकर शेयर करते हैं। लेट सपोज इसने अपना बीपीडीयू मैसेज सेंड किया स्विच ए की तरह, स्विच ए ने अपना बीपीडीयू मैसेज सेंड किया स्विच बी की तरफ, राइट? बीपीडीयू मैसेज, राइट? सिमिलरली स्विच ए सेंड करेगा एक बीपीडीयू मैसेज टुवर्ड्स स्विच सी एंड स्विच सी विल आल्सो सेंड BPDU message towards switch A, right? And same way, switch B and switch B C sends BPDU message to each other to elect the root bridge, right? तो जब स्विचेस आप आते हैं तो सभी स्विचेस अनाउंस करते हैं कि आई एम द रूट ब्रिज बिकॉज दे डोंट नो ब्रिज आईडी टू ईच अदर। वन स्विचेस रिसीव बीपीडीयू मैसेजेस टू ईच अदर, देन switches immediately stop that I am not the root bridge because my bridge ID is lower than my bridge ID higher than you। तो इस टोपोलॉजी में आप देख सकते हो कि इस स्विच ए की जो ब्रिज आईडी सबसे लोवेस्ट है तो दिस स्विच आई मीन स्विच ए विल बिकम द रूट ब्रिज एंड इन स्विचेस के बीच में जब इलेक्शन होगा इस स्विचेस को पता चल जाएगा बीपीडीयू मैसेज के थ्रू कि मेरे जो ब्रिज आईडी है, राइट, मेरी ब्रिज आईडी जो है वो स्विच ए से हायर है तो मैं रूट ब्रिज नहीं हूं, मैं नॉन रूट ब्रिज हूं, राइट? तो यहाँ पे ये से इलेक्शन होता है, राइट? तो आपने देखा कि रूट ब्रिज का इलेक्शन कैसे होता है इसमें, राइट? तो in next video I will explain about types of BPDU message, right? Let me type one thing, types of BPDU message, types of BPDU message, right? Types of BPDU messages. Number 1, configuration BPDU. Number 2, ECN BPDU. ECN means topology change notification. I will explain both BPDU, I mean configuration BPDU and TCN BPDU in next video, right? So
let me recall once again what I have explained in this theory. तो एसटीपी जो है कि इसका जो फुल फॉर्म होता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है, एंड एसटीपी स्टैंड फॉर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एंड ये लेयर 2 प्रोटोकॉल है जो लेयर 2 पे काम करता है, एसटीपी प्रोटोकॉल जो कि स्विचेस में ओनली चलता है। एंड एसटीपी प्रिवेंट्स करता है लूप बिटवीन द स्विचेस, राइट। लेट सपोज इफ यू हैव अ टू लिंक्स, राइट, redundant link, I mean, right? So on that time, STP will keep some interfaces blocking and some interfaces it will keep forwarding state, right? So यहाँ पे आपने देखा STP में कुछ terminology है that we need to understand. Root bridge क्या होता है, right? Let me tie the spelling mistakes. तो रूट ब्रिज क्या होता है, बीपीडीयू क्या होता है, कॉस्ट, राइट। कॉस्ट, इफ आई टॉक अबाउट कॉस्ट, लेट मी टेल दिस थिंग, जस्ट remember these things, right? If I talk about cost, इथरनेट की जो कॉस्ट होती है, राइट, इथरनेट जो कॉस्ट होती है वो 100 होती है, राइट। एंड फास्ट इथरनेट की जो कॉस्ट होती है वो 19 होती है, राइट। एंड बिग इथरनेट की जो कॉस्ट होती है वो होती है 4 होती है, राइट। एंड 10 गिग की जो इथरनेट की कॉस्ट होती है, गिग इथरनेट की जो कॉस्ट होती है वो 2 होती है, राइट। जस्ट रिमेंबर दैट। And one more thing. So DP and RP port, I mean root port and designated port and alternate port, I will explain it in next video, right? So what is a root bridge? A switch which has a lowest bridge ID will become the root bridge. And the bridge ID consists of two part, priority plus base MAC address of the switch. As you can see that I have uh, so I have shown you here bridge ID consists of two part, priority plus base MAC address, and as you can see that in this topology, switch A will become the root bridge because because switch A having the lowest bridge ID, that's why this switch will become the root bridge, and switch B and switch C will become the non-root bridge, right? Because this switch B and switch C having the higher bridge ID than switch A, right? And BPDU stand for Bridge Protocol Data Unit, and it is used to elect root bridge. रूट ब्रिज का इलेक्शन करवाने के लिए बीपीडीयू का यूज होता है, एंड आफ्टर 2 सेकंड में सेंड होते हैं बीपीडीयू मैसेजेस। एंड BPDU which has the lowest bridge ID will become the superior BPDU। जिस BPDU में lowest bridge ID, I mean best bridge ID होगी, वही BPDU क्या होगा, superior BPDU होगा, right? Superior means best BPDU होगा, right? And in superior BPDU I will explain it next video, right? Root bridge always generates a hello message after every 2 seconds, that message is called BPDU, right? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट ब्रिज का इलेक्शन कैसे होता है, यहाँ पे मैंने आपको अभी समझाया है, राइट, जस्ट बिफोर 5 minutes ago। एंड as you can see that there are two types of BPDU, configuration BPDU and TCN BPDU। TCN means topology change notification, and cost you just have to remember ethernet की कॉस्ट जो होती है वो 100 होती है, एंड फास्ट इथरनेट की कॉस्ट होती है 19 होती है, एंड गिग इथरनेट की जो कॉस्ट होती है 4 होती है, 10 गिग इथरनेट की कॉस्ट होती है 2। लेट मी शो यू कॉस्ट इन the lab also. So spelling tree. So as you can see that cost, currently I'm using fast ethernet link, that's why cost it is showing that 19, right, in this topology. So
Thank you for watching this video. If you have understood anything from this video, so please like and share and subscribe my channel. And if you have any doubt while understanding root bridge, then please comment in the comment section. So thank you for watching this video till the end.